Yeah. So before we go on to move on to this, what you say is flow control statements. Let us see few more things here. Okay. So far, how many types of operators have we seen? So far, how many types of operators? Yes, कितने तरह अभी अभी तक in the revision phase, how many types of operators we have seen? Anant, anyone else? अरे it's a very simple question. Come on, respond. नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? No idea. अरे सरप्राइजिंग है. Types. सौरभ 5 कहाँ देखा है? अभी तो रिवीजन फेज में कितने तरह के ऑपरेटर देखे हमने? सर रिवाइज सिर्फ 5 के है. सॉरी. हाँ, yes सौरभ, you were saying something. रिवीजन में सिर्फ 5 देखा है ना सर अभी. रिवीजन में सिर्फ एक देखा है. In 5 revision phase, सर. this is our 7th class. In the revision, which operator have we seen from class 1 to 7 अभी तक? This is disappointing. Assignment operators, arithmetic operators. Which operators are Assignment, arithmetic. assignment and arithmetic operators? So why are you not speaking up? देखो, till the time you don't interact to respond, मेरा भी pace slow होगा, तुम्हारा भी progress slow होगा. Arithmetic operators. थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करो. Okay, few more. So bitwise किधर देखा है प्रशांत? Have we seen bitwise? Not in the revision, sir. That's what I'm saying. Relational and comparison. No, we have not seen. Relational and comparison and logical. Less than, greater than, less than, equals to, double equals to, not equals to, and, or, not. Not. ठीक है. So ये तीन होता है इसमें. So now we'll start with relational or comparison operator.
That is assignment. Saurav is asking, what is this? X plus is equals to 3. This is same as x is equals to x plus 3. But what is this operator called? Anyone? इसको क्या बोलते हैं? What is this operator called? Prashant, if your screen is lagging, you can try to join again. No, that this operator, that means this one is, it's an assignment operator, but the more correct or technical name is augmented assignment operator. Okay, augmented assignment operators. So what are the possible augmented assignment operators? Plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, division equals to, double integer division equals to, or float division जो बोलो. Then you have modulus equals to, ठीक है? Give it try करना if it works or not. So these operators, which finally expand into this form, is known as augmented assignment operators. Okay, Prashant. ठीक है. So I hope my screen is not lagging for others. Yes, Anand. Okay, ठीक है. Right. So now relational or comparison operator. So you can write here augmented plus assignment plus augmented assignment operators. Operators. Okay. ठीक है. So remember x plus equals to 3 is same as x is equals to x plus 3, x minus equals to something is same as x minus, or मान लो if somebody has written x plus equals to a minus b, what will this mean? Try to write, चलो बताओ. What will that evaluate to? Yes, Shashank. What do you think? Hmm? So x plus, ठीक है. Yeah, correct. Okay, so this will imply x is equals to x plus a minus b. Okay. So this is your rough area. Right. So now we'll proceed on to comparison operators. उसके बारे में कुछ देख लेते हैं. Relates or compares. ठीक है शशांक. Yes, अजय, वो that x will be in lower case, पहला x, first x, or compares
That generally Shashank happens in mobile. The first character by default becomes capital. So maybe इस कारण लिख दिया होगा. Okay. Uh, Relates or compares two operands at a time. Okay. So relates and compares two operands at a time. Always gives result as binary. That is either true with capital T and true or false with capital F. Okay. Example. So like I said, it works two operands at the same time. Okay. Is compared using the relational operator. For example, x is equals to 2 greater than 3. Print x. What will be the answer? Hmm. What will be the answer of this? Okay. So ठीक है प्रशांत and सौरभ false. Okay. मान लो ऐसा होता. This is first example. Second example. Okay. Y is equals to 2 less than 20 greater than 7. और नहीं बस इतना ही मान लेते हैं. कंपाउंड नहीं करते हैं इसको. इस केस में क्या होगा? लेट्स से प्रिंट y. What will be the answer? True. Okay. Now, if we write z is equals to 2 less than equals to 2, what will be the answer? इस केस में आंसर विल बी ट्रू. ठीक है. If we have p is equals to 3 double equals to 5, then print p करेंगे, what we will get? Yes, इस केस में क्या होगा? False. Correct. Why errors, Saurav? Why do you think error will be there? Do you think this will mix up with this? ऐसा है कुछ क्या? नहीं, ये नहीं होगा. Because if you see the preference order, ठीक है, when you check the preference order, this has double equals to will be having higher preference than this. तो ये पहले solve होगा. Okay, right side of the equals to इसीलिए पहले solve होता है because equals to is having the least preference of all the thing that are all the operators that are present.
ओके, ठीक है। तो अगर ये सब समझ गए हो, सो वन मोर थिंग टू नोट हियर, प्रियंका हैज ज्वाइंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? 10. Okay, somebody please inform Priyanka. Vishnu Priya देखो, I don't know whether she is. अच्छा, she is not well. ठीक. Right. So now one question. Okay, ठीक है. बोलना उसे कि go through the video later. One question here. What is the difference between single equal to and double equals to? Yes, who will tell? Palak? सर सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। Okay, so single equals और to वो is used for assignment. Okay. हाँ, और डबल इक्वल टू जब हमें ये पता करना होता है कि कोई चीज एक दूसरे से इक्वल है, जैसे कि इफ वगैरह में हम यूज करते हैं। Equality is used for checking equality of data values. Another difference, single equals to is assignment operator. Okay, double equals to is relational or comparison operator. Okay, fine. Okay, so I hope is में कोई तुम लोगों को you don't have any problem. What are relational operators? And then we'll see what is not equals to. Just जो हम लोग ये लिखते हो ना मैथ्स में, that is not equal to. Okay, so चलो एक लिख देता हूँ मैं. What will be the answer? True or false? Okay, ठीक. Okay, good. ठीक है. So this was all about your comparison operator. Then the next that we will see is your logical operator. False कैसे हो जाएगा कीर्तना? How will it come as false? सर सॉरी, वो बहुत पहले भेजा था, सेंडिंग ही दिखा रहा था। अच्छा, तो माइक ऑन करके बोल दो ना, तुम्हारा मैसेज तो बहुत देर से डिलीवर होगा. ठीक है. Okay, now next is logical operator.
ठीक है. So what are the things that we see in logical operators? Combination of two or more relational operators. Results in Boolean. This also results in Boolean type. That is either true or false with capital F. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. A is equals to 2 greater than 3 and 5 less than 7. इसके लिए we will see truth table. Truth table ध्यान में रखना. Truth table for and. Okay. Let's say there is an operand x, there is an operand y, and then you have x and y. If x part, x and y itself may be resulting in either true or false. So if x is false, y is false, x and y क्या होगा? Result will be false. X is false, y is true, then result will be False. okay. X is true, y is false, result will be False. false. True and true will give you true. So this structure it follows. है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer of this thing? Print A if you write. Now check here. What will this result in? This is x and this is y. What will this result in? 2 is greater than 3. True है या false है? False. 5 is less than 7. True. क्या है ये? True. So false and true क्या होता है आंसर? False. So this will give you false. अगर ऐसा लिख दूं, this is let's say example 1. X is x नहीं देते हैं. A is equals to false and minus 3 is greater than minus 17. Print A. What will be the answer? False. क्यों? What is x and what is y? This is x and
This is y. X is already false. Y का solve करके क्या आएगा? -3 is greater than -7. This will result in true. Again same thing है, false and true. This will again give you false. Okay. Directly भी check कर सकते हो. B is equals to true and 14 is less than equals to 14. इसमें क्या आएगा? प्रिंट भी करेंगे तो is True. true. क्यों? This part will is x, this part is y, so this will result in true. This is already true and this will also result in true. Therefore, true and true will give you true. ये कंसेप्ट समझ में आया? तो let me know. Sir, हाँ, Yes. x is either a Boolean type either a Boolean type or a or an expression which will result in Boolean type. Okay, so we have seen this for and. Okay, we will next page we will see this uh, table for or and not. Okay, truth table for or में क्या होगा? What will be the truth table? If x and y are either Boolean types or an expression which will result in Boolean type, that means they may be some expression which will finally give you a Boolean type. Then what will be the value of x or y? What can be the different possible combinations? That means false and false. क्या देगा? False, false or true will give you क्या? False or true? True. True. True or false will give you क्या होगा इस केस में? What will be the answer? True, sir. डाउट है? नहीं, ठीक है. True and true will give you true. ठीक है? Same thing. X, y are Boolean data type, Boolean type or expression of expression which will result in Boolean type. ठीक है?
Okay. Now, truth table for not, क्या होगा? Not will have only how many operands? It will only have one operand, which can be a Boolean type or an expression which will result in Boolean type, not x. It's not a function. मैं just लिख रहा हूँ not x, ये bracket operator. So if it is true, answer will be false. If it is false, it will be true. So sort of inverter की तरह act करता है. ठीक है? Based on this, let's say we have thread. Fourth example. A is equals to 2 greater than 3 and 5 equals to double equals to 4 or true. What will be the answer? True. प्रशांत believes true. अजय को भी true लग रहा है. Okay. और कोई? Anyone? पलक? What will be the result of this? 2 greater than 3? False. 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 Okay. What is 5 double equals to 4? False. False. So tell me, what will be the combined result of this? False and false is False. false. Now अब तुम्हारा expression किस में reduce हो गया? False और true. ठीक है, इसका पूरा का वैल्यू false आ गया. This full expression resulted in false, and then you have or true. तो false or true. False or true will give you True. not sure कैसे थे अभिषेक? Okay. So देख सकते हो. Just a minute. Just a minute. Let me open the CMD. Then, okay. So what we'll see that 2 greater than 3 will be. जल्दी बताओ. ये तो बहुत सिंपल है. False. ये क्या होगा? True. ट्रू. इन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट. ओके. What will be the answer of this? False. फॉल्स. दो ही तो है. गेस मारने 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने का. फॉल्स. What will be the answer of this? False. What is the answer of this? False. ठीक है.
So what do we understand? Acha, what is the answer of this? क्या आएगा? false. True. तो what do we understand? चलो यहाँ एक और लिख देता हूँ. Note this is an important note. In context of evaluation, evaluation of in context of evaluation of an expression, or rather in context of evaluation of relational or logical operators, okay, all real numbers other than 0 are considered true, while 0 is considered as false. Okay, so can we do something like अच्छा ये पॉसिबल है क्या? ट्रू ग्रेटर देन 3. आंसर देखो. ट्रू greater than 1, true greater than equals to 1. ओके, ये भी मैं बता रहा हूँ क्या होता है. False less than 1, false less than 0, false less than equals to 0, false is double equals to 0. That means double equals to 3. That means इसका भी मैं सब पार्ट लिखूंगा. For relational case operator, zero is considered as false and 1 is considered as true. For logical operator,
जस्ट जैसे देखो, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ठीक है, 5 एंड ट्रू, ट्रू, 0 एंड ट्रू, 0, ठीक है, मतलब false and 0, ठीक है। सो तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, जनरली फॉर ट्रीटमेंट ऐसा तुम लोगों को जरूरत आएगा नहीं और ऐसा पूछेगा भी नहीं, बस याद रखना कि फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके, क्या होगा तुम्हारा, ये वाला केस है। अच्छा, यहां पे मैं मिटा देता हूं। ऐसा होता है कि when you have all numbers that is logical operators only, तो other than 0 true, while other than while 0 is considered as false. For relational operator, 0 is considered as false and 1 is considered as true, ठीक है। तो ट्रू का मतलब 0, 1 एंड 0 का मतलब फॉल्स होता है इन केस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इतना ही जानना है, हम लोग बहुत ज्यादा डीप में देख लिए हैं, बट जनरली ऐसा आएगा नहीं। हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके भी देखे हैं, वी हैव सीन हियर, ठीक है। हाँ, बट याद रखो, जब दोनों तरफ एक ही नंबर हो, ठीक है, 5 एंड 6 देख लेते हैं, 6, तो 6 एंड 5, 5, सो व्हेन यू राइट बोथ द साइड्स एज न्यूमरिक, दोनों तरफ बुलियन नहीं है, तो उस केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया है, वट एवर यू राइट सेकेंड विल बी योर आंसर, ठीक है। हाउएवर इस केस में भी वही हम लोग देखेंगे, फॉल्स एंड 5। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स जब देखो ट्रूथ टेबल अगर यहां देखोगे, ठीक है, एंड में, एंड कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू है, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। एंड कब ट्रू होगा, व्हेन बोथ आर ट्रू देन एंड विल बी ट्रू। पर यहां पे हमने क्या देखा है, वन इज फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली आंसर फॉल्स होना है, ठीक है। बट इफ यू राइट ट्रू एंड 5, देन आंसर इज कमिंग एज 5, या नहीं तो इसको उल्टा कर दोगे, interchangeably you will get answer. That means this suggests that न्यूमरिक वैल्यू को ये ट्रू मानता है, ठीक है, अदर देन 0 को। पर यहीं पे अगर इफ यू राइट फॉल्स, इट विल गिव यू फॉल्स, क्योंकि एक भी आंसर फॉल्स हुआ तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। 0 लिखोगे तो 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखो, इन केस इफ यू गेट एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इन केस इफ यू गेट एन एक्सप्रेशन जहां पे तुम्हारा यू हैव टू डिसाइड वेदर 0 इज एक्टिंग एज ट्रू एंड 1 इज एक्टिंग एज फॉल्स, तो पहले देखो क्या वो रिलेशनल ऑपरेटर है। इफ इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, देन योर आंसर विल बी
what क्या होगा आंसर? Then your answer will be like you will evaluate on the basis of whether the number is non-zero. If the number is non-zero and you have to evaluate it as a part of relational operator, then you will consider it as a uh, true case, and if answer is zero, then you will consider it as a false case. Similar approach इसमें भी लगाओगे in case of evaluation of logical operators, but the only one difference is only zero is treated as a what you say is false. Other numbers are treated as uh, like I said what you say is true. ठीक है? तो but ऐसा केस आएगा नहीं. At max you will get this case. ठीक है? At max कभी तुम्हें इमेजिन करना होगा तो वो कुछ ऐसा केस आएगा जहां पे जीरो is false and one is true, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें. ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फॉल्स और ट्रू मिक्स नहीं करेगा. यू विल गेट एन आंसर जो कि इट विल बी लाइक रिजल्ट ही तुम्हारा फॉल्स आ जाएगा या रिजल्ट ही ट्रू आ जाएगा. ठीक है? तो ट्रू फॉल्स में ही ऑपरेशंस रहेंगे, नंबर्स और ट्रू फॉल्स मिक्स नहीं होगा. बट जस्ट इन केस इफ रिलेशनल ऑपरेटर्स में इन्वॉल्व्स zero, then you will say that that should be true false के साथ 0 1 mixed है, then 0 will be evaluated as false and 1 will be evaluated as true. ठीक है? तो even if you do not pay attention to this, it is all right. ठीक है? मैं बस weird case scenario के लिए बता दिया जो कभी होगा नहीं. ठीक है? Mostly you will be dealing with, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, mostly you will be dealing with relational operators involving only relational operators involving only numbers and logical operators involving only Boolean types. ठीक है? ठीक है? तो ये केस रहेगा तुम्हारा. तो डोंट गेट टू मच फैसिनेटेड बाय कि ये क्या हो रहा है. मिक्सचर नहीं आना चाहिए. ठीक है? वो तुम्हारा एग्जाम नहीं आएगा, रियल लाइफ सिनेरियो में भी 95% टाइम नहीं आएगा. और जब आएगा इंटरप्रेटर खोल के चेक कर लेना कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन. सो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है? तो दैट इज इट. एक काम करते हैं, विल मीट एट 11:35 नाउ. ठीक है? एंड देन वी विल सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑपरेटर्स के बाद, and we'll wrap it up by 12:15. ठीक है?